Welcome, dear students. This is our fifth lecture on Newtonian mechanics. तो आज के lecture में हम we will construct few equations of motion for different forces, and then we shall see how to solve those equations of motion. तो न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके अगर किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स F है तो वी हैव टू पुट दैट F इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. सो दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ. This is the net external force which is acting on a body which has got mass m, and this double differentiation of position vector with respect to time, this is the acceleration of the body. तो इस तरह हमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन कंस्ट्रक्ट करनी है. Mass times acceleration, we have to put that equal to net external force, and this is called equation of motion. अच्छा, ये जो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन अनदर डिफरेंशिएशन. लेकिन जब हम पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट बिकम्स वेलोसिटी. सो दिस first differential coefficient of position vector with respect to time, this becomes velocity. Then we can write the equation of motion also as m times d by dt of v. So this is also equation of motion. Mass times acceleration, where acceleration को हम लिखते हैं as the differentiation of velocity with respect to time. तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो वहां पे हमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन ज्यादा सूट करेगी कि मास टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो चाहे हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें या ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, बोथ आर इक्वली applicable, but it depends के problem क्या है, situation क्या है. Now इस equation of motion को solve करने के लिए we have to know के what is the form of this force, because this force can be a function of position, which is the easiest to tackle with. This force can be sometimes dependent on velocity in the case of viscous forces, and in certain cases this force can be a function of time. It can depend on time. तो उसकी example है forced oscillation के if there is a pendulum swinging, एक झूला झूल रहा है और उसको हम after regular intervals of time धक्का दे रहे हैं, so we are making the pendulum or the swing to oscillate forcibly. तो उस वक्त जो हमारा applied force है, that will depend on time. तो force can be a function of position. It can be position dependent. Force can be a function of velocity. It can be velocity dependent, and force can be in certain cases time dependent. तो हमें देखना है कि force का format क्या है, force किस किस चीज पे depend करता है. So let us take the simple example in which the net external force is 0. So equation of motion is m
dv by dt equals the net external force. Now in our case the net external force is 0, so the equation of motion will be m dv by dt is equal to 0. So m is not 0, so which implies we can write that dv is equal to 0 because dt right hand side पे चला जाएगा, तो right hand side तो सारा 0 है ही, तो dv will become 0. तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो we shall integrate and we have to add a constant of integration on the right hand side. Left hand side पे integration and differential will go, तो left hand side पे we will get only v. So v we are getting equal to some constant. So immediately we see that v must be a constant. When the net external force on a body is 0, the velocity of the object must be a constant. अच्छा, इसमें जो velocity है, velocity is a vector, तो velocity has got two things. एक तो इसका magnitude और दूसरा direction. तो जब हम कहेंगे कि velocity is a constant, तो इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, दैट मीन्स डायरेक्शन इज फिक्स्ड. द ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, इन अ स्ट्रेट लाइन. तो देयर इज an example of motion जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नाउ यूनिफॉर्म से आप ये धोखा न खाएं कि इट इज यूनिफॉर्म मोशन. नो, इट इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन में एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कल में रिवॉल्व करता है at a constant speed, so it travels equal distances in equal time. लेकिन अगर आप किसी भी पॉइंट पे, supposing it is revolving anti-clockwise, अगर आप इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी देखें, it will be having this direction. थोड़ा आगे जाके अगर हम इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी देखना चाहें, it will be having this direction. अगर हम इस पॉइंट पे देखना चाहें, it will be having this direction and so on. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भले कांस्टेंट हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है. सो दैट मीन्स सिंस द वेलोसिटी इज चेंजिंग डायरेक्शन, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, सो हियर f कैन नॉट बी 0. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the force on the object cannot be 0, and we very well know कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के लिए there is a force which is directed towards the center, and that force is called centripetal force. तो जब हम कहेंगे कि velocity is a constant, तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन भी फिक्स है और इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है. अच्छा, when the force is 0, there arise two cases. Number one, if velocity is constant and equal to 0. So velocity जो हमें constant मिला था, but that constant is itself 0. So that means the object is very much at rest. So this is case number one. Case number two, if the velocity is constant but has some finite non-zero value, and that non-zero value is equal to v naught, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी b कह सकते हैं, कि जिस वक्त हमने इसकी मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो उस वक्त उस टाइम को हम t इज इक्वल टू 0 से डिनोट करेंगे. तो उस वक्त हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v नॉट है. तो
we can write that dr by dt, which is its velocity, which is constant, equals v naught. तो इसको हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर सकते हैं. वी कैन टेक दिस dt ऑन द राइट हैंड साइड, सो वी विल गेट dr इक्वल्स v नॉट dt. तो वी कैन इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. इंटीग्रेट जब करेंगे तो राइट हैंड साइड पे हमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड करना पड़ेगा. सो वी विल इंटीग्रेट इट हियर. V naught is a constant, so we will integrate dt, but we will introduce a constant of integration. So we will get the constant of integration can be k, it can be c, whatever जो भी आप लिखना चाहें. मैंने यहाँ पे k लिखा है. Now this value of k we have to determine using initial condition. तो initial condition ये है कि इसमें जब हम t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी इनिशियल कंडीशन हमने देखना है कि उस वक्त पोजीशन वेक्टर का वैल्यू क्या था. व्हाट वाज द इनिशियल वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर, एंड सपोज द इनिशियल वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर इज r नॉट. तो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे t इज इक्वल टू 0 और r की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे r नॉट. So we will get r naught is equal to v naught into t, which is 0 plus k. तो हमें यहाँ से k का वैल्यू मिल रहा है r naught. तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो we will get r is equal to v naught times t plus k की जगह r naught. So this is expression for position vector. सो इस तरह हमने देखा कि एक इक्वेशन ऑफ मोशन को 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ता है. तो जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार इंटीग्रेट करें तो हमें वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन मिलती है. जब उसको हम एक और बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पोजीशन वेक्टर के लिए एक्सप्रेशन मिलती है. बट वी मस्ट बी नोइंग द इनिशियल कंडीशंस, दैट इज कि इनिशियली वेलोसिटी का वैल्यू क्या था, इनिशियली पोजीशन का वैल्यू क्या था. तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व एन इक्वेशन ऑफ मोशन. लेट अस टेक a special case of force, that is the electric force. So electric force acts on electric charge. Supposing this is a point जहां पे हमारा एक particle है. We have got a particle having charge q and mass m. और इस पॉइंट पे the value of electric field is E. For the sake of simplicity, let us take this charge is positive. So the particle will experience a force F, and that force will be in the same direction as that of the electric field because the charge is positively charged, and that force is given by charge times electric field. So this is the expression for the electric force. तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन कंस्ट्रक्ट करेंगे. इक्वेशन ऑफ मोशन इज के मास इनटू dv by dt, that is mass times acceleration, equals force. And here our force is q times E. This is electric force. So we get equation of motion as m dv by dt is equal to q times E. अगर हम यहाँ सिर्फ acceleration के लिए expression देखना चाहें तो we have to take this m on right hand side, जो कि यहाँ divide हो जाएगा. So acceleration के लिए हमें जो expression मिलती है that is dv by dt. So this is expression for acceleration of the charged particle. इसको हम सॉल्व करेंगे. We will take this dt on right hand side. So
we will get dv is equal to q by me into dt. इसको हम integrate करेंगे तो we will integrate it. Now q, the charge of the charged particle, that is constant, mass is constant, electric field is uniform, तो integration सिर्फ dt की होगी, plus we have to add here a constant of integration. So that will be our next step. Constant of integration को हम capital C से denote करते हैं. Now this integral and differential will go, so we are left with only v. Similarly, this integral and differential will go, we are left with t. So we will get v is equal to q by m e t plus c. अब ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसका वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए वी नीड इनिशियल कंडीशन, यानी व्हेन t वाज 0, इनिशियल कंडीशन उस वक्त वेलोसिटी का वैल्यू क्या था, एंड सपोजिंग द इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वाज v नॉट, तो हम इस इक्वेशन में वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इनिशियल कंडीशन. तो वी विल गेट v naught is equal to q by m e into initial condition में time 0 है plus the integration constant c. Now this term whole thing becomes 0, तो हमें c का जो वैल्यू है we get c is equal to v naught. So we get c is equal to v naught. तो c इज इक्वल टू वी नॉट जो है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो c इसकी जगह हम लिखेंगे v नॉट. सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ a charged particle which is in a uniform electric field E. So this is expression for velocity. तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार इंटीग्रेट किया, तो we got the expression for velocity. अब इसको हम एक और बार इंटीग्रेट करेंगे, तो we will get expression for the position. So let us do that. We have got expression for velocity, and the velocity is the first differential coefficient of position with respect to time. तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे. So वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड पे, उसकी जगह हमने लिखा है dr by dt. इसको इंटीग्रेट करने के लिए वी विल टेक dt ऑन राइट हैंड साइड, तो dt विल गेट मल्टीप्लाइड टू बोथ दोज टर्म्स. इस टर्म को भी मल्टीप्लाई, इस टर्म को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट वी विल इंटीग्रेट, सो वी विल इंटीग्रेट हियर q by m into e, it is whole a constant, so integration हम यहाँ करेंगे, और v naught which is the initial velocity, that is also constant, तो integration यहाँ, plus we will add a constant of integration. And that constant of integration I have represented or denoted with k. So left hand side पे integral and d will go. This is integration of t with respect to dt. तो इसकी जो integration है एक power add हो जाएगा, t का power 1 है, so it will become t square, और divide में भी यही power हो जाएगा, so it will be t square by 2. d and integral will go. So that means this is what we will get after integration. R equals q by me t square by t 2 plus v naught into t plus k. Again, we have to see what is the value of constant of integration using initial condition. So initial condition is when t is equal to 0. When t is equal to 0,
that is the initial condition. What was the initial value of position vector? Let us denote with that with r naught. तो इसमें हम p का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और पोजीशन वेक्टर r का वैल्यू r नॉट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये टर्म भी 0 बनेगी, ये टर्म भी 0 बनेगी। सो वी गेट k इज इक्वल टू r नॉट। तो k इज इक्वल टू r नॉट जो है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वी विल गेट r is equal to qe by 2m t square plus v naught times t plus r naught. So this is the expression for position vector of a charged particle moving in a uniform electric field E. तो इस तरह हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसेक्यूटिवली 2 बार इंटीग्रेट किया। तो एक बार इंटीग्रेट करने से हमें वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन मिली और दूसरी बार इंटीग्रेशन करने से हमें पोजीशन वेक्टर के लिए एक्सप्रेशन मिली। Now let us do a problem on that. We have got a particle that is proton. प्रोटॉन को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर और इसके साथ ये आई कैप है। इट मीन्स इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर खाली मैग्नीट्यूड में देखना चाहूं, इट इज 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। लेकिन अगर मैं इसके डायरेक्शन भी लिखना चाहूं तो ई वेक्टर इट इज 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर एंड द डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस and it is accelerated from rest. So that means the initial velocity v naught that is 0 meter per second. So this is given. It is also given that it is accelerated for only nanosecond. That means 10⁻⁻9 second. So t भी दिया गया है। So we have to find what is the final velocity v. So v के साथ मैं क्वेश्चन मार्क रख रहा हूँ। तो we should be knowing charge of proton. We should be knowing mass of the particle. So mass of the proton, that is 1.67 × 10⁻⁻27 kilogram. Charge of the proton, that is 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb, and this is the equation which you have to use. So q that is given, mass that is given, electric field that is here, so it is also given, time that is nanosecond, this is given, and this v naught that is 0. So I hope you can solve it. I leave it to you. I will give the final solution. The velocity is 2.4 × 10⁻³ meter per second, and it is along x-axis, the same direction as that of the electric field. Now let us take as an example another force, and that is the viscous force. जब भी हम एक बॉडी को किसी मीडियम में मूव कराना चाहें, लाइक वाटर में, एयर में या किसी और मीडियम में, तो द मीडियम अप्लाइज ए रिटार्डिंग फोर्स if we want to move the body in this direction. So let this be the velocity with which we want to move this body in this direction. The medium applies a backward force जिसको हम viscous force कहते हैं, viscous drag, and that force is directly proportional to this velocity but directed opposite, because motion जो है इस diagram में motion is to the right
but the viscous force is to the left. तो मीन्स कि जितना तेजी से हम ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहें किसी मीडियम में, तो उतना ज्यादा विस्कस फोर्स अप्लाई होता है। तो इसको आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप किसी पब्लिक गाड़ी में हैं, तो आप हाथ थोड़ा सा बाहर निकालें, तो हालांकि एयर जो है बाहर दैट इज स्टैंडिंग स्टिल, विंड नहीं होती है, बट फिर भी आपका जो हाथ है ऐसा लगता है कि उसको पीछे की डायरेक्शन में कोई पुश कर रहा है। नाउ दैट पुश इज द विस्कस ड्रैग। और जितनी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी उतना आपको लगेगा कि आपके हाथ को ये एयर जो है पीछे धक्का दे रहा है। Now this is how you can yourself experience this viscous drag. So this force, viscous force, is directly proportional to the velocity, and it is directly opposite. तो इस proportionality को हम equality में convert करते हैं. We introduce a constant of proportionality B. So we can write that the viscous force equals minus BV. This B is called a damping constant. तो अगर आपने स्टोक्स लॉ पढ़ा हो, स्टोक्स लॉ में B का वैल्यू है 6 पाई ईटा R। तो कॉन्सिक्वेंटली हमें स्टोक्स लॉ में जो फोर्स है अपोजिंग फोर्स दैट इक्वल्स माइनस 6 पाई ईटा R into V. Stokes law में we have got a body in the form of a sphere जिसका रेडियस होता है R, and eta that is called the coefficient of viscosity. R is radius of the body and V is the velocity with which it is moving in the viscous medium. So the force is given by the expression minus B times V. So this is a force which is a function of velocity. तो अभी तक जो forces थे, they were either constant or they were function of position. So this is a force which depends on velocity. तो इसकी equation of motion हम लिखेंगे, तो we will start mass into acceleration, that is dv by dt. इसको हमने रखना है, we have to put this equal to the external force. So this will be our equation of motion. तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो वेलोसिटी है और इसका डिफरेंशियल है, इसको हम एक ही साइड पे रखेंगे। तो अच्छा, एक और चीज, सिंस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू इट, तो यहाँ पे ये जो वेक्टर नोटेशन है ये रखने की जरूरत है ही नहीं। So this equation will become a scalar equation because we know minus sign का मतलब है the velocity and the force they are directed opposite. तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए we will take this v on left hand side जो dv के डिवीजन में चला जाएगा। तो we will get dv by v is equal to minus b by m dt. तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। b is a constant, m is a constant, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे होगी and we will add a constant of integration. अब अगर कहीं पे हमें हो dv by v, यानी this is the integration of 1 by v with respect to dv, इसकी integration that is always log, the natural log of the function. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें नेचुरल लॉग मिलेगा। So we will get natural log on the left hand side, or right hand side पे this integral and d will go
तो हमें खाली t मिलेगा प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू अगेन वी हैव टू यूज द इनिशियल कंडीशंस. So initial condition का मतलब है कि when t was 0, what was the value of velocity, and supposing the initial velocity of the body was v naught. So we are applying the initial conditions that the initial value of velocity at time t is equal to 0, it was v naught. We will use only the magnitude. सो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में v की जगह हम v नॉट यूज करेंगे और t की जगह हम 0 यूज करेंगे. तो दैट मीन्स दिस टर्म विल बिकम 0. सो वी विल गेट c इक्वल्स log ऑफ v नॉट. तो इसको हम यहां पे यूज करेंगे, c की जगह हम यूज करेंगे log ऑफ v नॉट. सो वी विल गेट log of v equals minus b by mt plus log of v naught. ये जो log of v naught है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये log of v को सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. Now we have got a property of log that log of x minus log of y, we can write it as log of x by y. तो x की जगह है v और y की जगह है v naught. So that means we will get log of v by v naught. So that is our next step. Log of v by v naught equals minus b by m into t. We will try to get rid of this log. So we will take anti-log on both sides. Anti-log का मतलब है we will take exponential function and exponential function. Log and log to the base e and exponential function, they are inverse functions of each other. They cancel each other's effect. तो लेफ्ट हैंड साइड पे वी आर लेफ्ट विद ओनली, हमें खाली मिलेगा v बाई वी नॉट. और राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर बनेगा माइनस b बाई एम टी. सो v बाई वी नॉट इक्वल्स दिस मच. हम इस v नॉट को राइट हैंड साइड पे ले जा सकते हैं. तो this is the final expression for velocity. This is velocity of the object which is moving in a viscous medium after time t, and this v naught is initial velocity. This is initial velocity जब हम इस ऑब्जेक्ट को विस्कस मीडियम में डालते हैं. तो यू कैन सी, अगर आप वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन देखना चाहें, इट इज अ डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल. सो द वेलोसिटी of the object which is moving in a viscous medium decreases exponentially with time. So we have got expression v is equal to v naught e raised to power minus b by m. अच्छा, यहाँ पे हम एक पैरामीटर डिफाइन करना चाहेंगे. वी हैव गॉट e raised to power minus b by m into t. इसको हम लिख सकते हैं e raised to power minus t होल डिवाइडेड बाय m. तो डिवीजन में था ही, इस b को भी हम नीचे ले जाएंगे तो वी विल गेट m by b. And this m by b we define as a parameter tau. इसको हम time constant कहते हैं. We call this as time constant. तो हमें फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगी e raised to power minus t और डिवीजन में आ जाएगा tau. So we define a parameter tau is equal to m by b. Remember, m is mass and b, it is the damping constant. It determines how strong is the viscous force. तो इन दोनों का रेशो, एंड
it has the dimensions of time. Obviously होने भी चाहिए, because exponential function का जो power है that should be dimensionless. तो अगर न्यूमरेटर में t टाइम है तो डिनोमिनेटर में tau, this should be also time. That is why we call it a time constant. It has the dimensions of time. तो हमारी जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू v नॉट e रेज टू पावर, दिस विल बिकम t बाई टॉ. अब हम इस टॉ को कैसे डिफाइन करेंगे? लेट अस पुट टॉ इज इक्वल टू t, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें मिलेगा माइनस t डिवाइडेड बाई टॉ की जगह भी t, तो दिस विल बिकम e रेज टू पावर -1 यानी 1 डिवाइडेड बाई e. तो हमें ये वेलोसिटी मिलेगी 1 बाई e ऑफ v नॉट. तो वेलोसिटी will become 1 by e of the initial value. So if tau is equal to t, the velocity after time t will become 1 by e of initial value. E Euler's constant, इसका हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और 1 डिवाइडेड बाई 2.71828 इसको हम कैलकुलेट करें, इट बिकम्स 0.368. तो अगर हम इसको परसेंटेज में लिखना चाहें 36.8 या अप्रोक्सीमेटली 37. सो दैट मीन्स के आफ्टर वी पुट एन ऑब्जेक्ट इन अ विस्कस मीडियम, after time equal to time constant, its velocity becomes 37% of its initial value or 0.37 of its initial value. That is how we define the time constant. So the time constant is the time for the velocity to drop by a factor of about 0.37 of its initial value. अगर हम वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना चाहें along vertical axis, we plot velocity of an object moving in a viscous medium, and along horizontal axis we plot time, so we get a decreasing exponential. And when t is equal to the time constant, that time velocity equals 0.37 of its initial value. As in another example, let us consider spring block system. तो इसमें हम एक स्प्रिंग को अटैच करते हैं विद अ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, और दूसरे साइड पे जो फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग है वी कनेक्ट a block, and the block rests on a horizontal frictionless surface. तो जो मिड पॉइंट ऑफ द ब्लॉक है we will take this as the equilibrium position, और उसके बाद हम एक फोर्स से इसको डिस्प्लेस करते हैं. Now this is our applied force. तो because of the elasticity, इस स्प्रिंग में एक फोर्स प्रोड्यूस होता है which is called restoring force, and that restoring force is directly proportional to the displacement. हम जितना ज्यादा इसको डिस्प्लेस करेंगे तो इस स्प्रिंग के अंदर उतना ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स भी पैदा होता है, बट दैट इज डायरेक्टेड अपोजिट, that wants to restore the spring block system back to this equilibrium position. तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो वी कैन राइट f इज इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स. तो यहाँ पे जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं. So the force on the spring block system is elastic force, and it is given by F is equal to minus kx. इसके लिए भी हम
इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं. Since the motion is occurring along only one dimension, so displacement या position के लिए we can take the coordinate x. तो equation of motion ये होगी m d square x by dt square is equal to force. यहाँ पे कैपिटल m है, बट इसको हम स्मॉल m से भी डिनोट कर सकते हैं. So this is the expression, and since our force equals minus kx, so this is our equation of motion. तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, we can take this m on right hand side, तो ये k के डिवीजन में चला जाएगा, so that will be our next step. इसके बाद ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो इसका जो माइनस साइन है वो पॉजिटिव बनेगा और राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 बचेगा. सो दिस इज द इक्वेशन. इसको सॉल्व करने के लिए वी कैन पुट दिस k बाई m इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. सो वी डिफाइन k by m is equal to omega square. So if we take square root on both sides, तो k by m is equal to omega. तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, we get d square x by dt square plus omega square x is equal to 0. Now this is a well-known differential equation in mathematics, and its solution is given by x equals a times sine of omega t plus phi. This a denotes amplitude, यानी कि जो ब्लॉक है, if this is its equilibrium position, x is equal to 0, ये मैक्सिमम कितना दूर जाता है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो that distance is called amplitude A. So amplitude is the maximum distance displacement of this block from its mean position. Omega, it is called the angular frequency of the spring block system, and it is given by the ratio of 2 pi by t, where t is the period of oscillation, यानी एक complete oscillation को करने में इस spring block system को कितना टाइम लगता है, that is the period. This phi is called phase of the spring block system, and it is given by applying the initial conditions. Okay, when t is 0, उस वक्त हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कहाँ पे है, सपोजिंग इट्स इनिशियल पोजीशन इज x0, तो वो अप्लाई करने से हमें फेज का वैल्यू मिलेगा. सो लेट अस अप्लाई द इनिशियल कंडीशंस. तो इसमें हम t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो x की जगह हम इनिशियल पोजीशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट दैट बी x0. तो हमें इक्वेशन मिलेगी x0 इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी विच इज 0. तो साइन के अंदर जो पहली टर्म है वो 0 बनेगी, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली साइन ऑफ फाई. सो x0 इक्वल्स a साइन ऑफ फाई. तो यहां से हमें साइन ऑफ फाई विल बी इक्वल टू, इसके साथ a मल्टीप्लाई है वो यहां जाके x0 के डिवीजन में चला जाएगा. But we don't want expression for sine, we want expression for only phi. So we will apply sine inverse on both sides. जब हम left hand side पे sine inverse apply करेंगे, we will get only phi, and left hand side, right hand side पे हमें मिलेगा sine inverse x0 by a. So this initial condition, that is the initial position of the block, gives us the value of this phase constant phi. So we get phi is equal to sine inverse x0 by a. अच्छा, इसी तरह
the period of oscillation, that is T, is related with angular frequency omega as 2 pi by T. चूंकि हमने ओमेगा को रखा है बराबर k by m, so we will equate 2 pi by T, we will equate it with under root k by m. तो हम t को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, सो t इज इक्वल टू 2 पाई, और ये जो अंडर रूट के बाई एम है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो हमें इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल मिलेगा, वी विल गेट 2 पाई m by k. सो दैट मीन्स t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m. तो ब्लॉक जितना हेवी होगा, जितना मैसिव होगा, तो उतना ज्यादा टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में. एंड t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ k. तो k जितना ज्यादा होगा, मीन्स कि स्प्रिंग जितना स्टिफ होगा, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, स्प्रिंग जितना स्ट्रांग होगा, तो उतना ये जल्दी ऑसिलेट कराएगा, तो उतना टाइम पीरियड कम होगा. सो वी गेट expression for period as 2 pi m by k. So with this we complete our lecture on equations of motion.